वेलकम टू द वीडियो। आज का टॉपिक वेरिएशन के बारे में है। बिफोर आई स्टार्ट, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। वेरिएशन जो है ये टू टाइप्स की होती है। डायरेक्ट वेरिएशन या डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और सेकंड है इनवर्स प्रोपोर्शन, जिसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट वेरिएशन नॉर्मली रिलेशनशिप है टू वेरिएबल्स में, जिसमें अगर एक वेरिएबल एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज करे तो जो सेकंड है वो भी साथ इंक्रीज करे, और सिमिलरली अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो इसके साथ इसकी जो कॉरिस्पॉन्डिंग क्वांटिटी है वो भी डिक्रीज होगी। इसकी जो डेफिनेशन है ये आपके सामने लिखी हुई है कि ये टू वेरिएबल्स के दरमियान एक रिलेशनशिप है जिसमें अगर एक इंक्रीज करे या डिक्रीज करे तो जो अदर वन है वो भी साथ इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। फॉर एग्जांपल, इजी सी एग्जांपल है कि अगर आपके एक पेन की जो प्राइस है अगर वो $100 है, तो अगर आप टू पेन बाय करेंगे तो उसकी प्राइस $200 हो जाएगी। अगर आप थ्री पेन बाय करेंगे तो उसकी जो प्राइस है वो $300 होगी। तो जैसे जैसे आप नंबर ऑफ पेन्स को आप इंक्रीज करें तो उसके कॉरिस्पॉन्डिंग उसकी जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज कर रही है। और ये वाइस वर्सा है कि अगर फाइव पेन $500 के हैं तो जो अगर आप वन पेन बाय करेंगे तो वो $100 का होगा। तो एक इंक्रीज कर रही है तो सेकंड भी इंक्रीज करेगी, और अगर एक डिक्रीज कर रही है तो सेकंड भी डिक्रीज करेगी। तो इस तरह की जो रिलेशनशिप है उसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन या वेरीज डायरेक्टली कहते हैं। ओके, अब इसमें जो फर्स्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चन है, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर वन सामने लिखा हुआ है कि a pile of 108 identical books has a mass of 30 kg to find the mass of 150 books. ओके, दिस क्वेश्चन जो है आप कैन बी सॉल्व बाय द रेशियो मेथड, है कि आप टू इसमें हेडिंग्स बना लें। आइडेंटिकल बुक्स की है तो जस्ट राइट हेडिंग के ये सर बुक्स है, और सेकंड जो है इट इज द mass ऑफ, तो यू कैन राइट mass। तो ये टू हेडिंग्स हैं। ओके जी, 108, और mass जो है इसका 30 kg है। फाइंड दी mass ऑफ 150 such books, तो राइट 150 ओवर हेयर। और आप हमने mass फाइंड करना है तो यू कैन जस्ट लेट दिस एज x। अब हमने इसमें डेवलप ये करना होता है कि क्या ये डायरेक्ट है या ये इनवर्स है। तो इसमें ये है कि अगर 108 बुक्स का मैथ 30 kg है, अब जो नंबर ऑफ बुक्स हैं वो इंक्रीज कर गई हैं, वो 150 बुक्स हो गई हैं। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि उनका जो मैथ है वो भी 30 kg से ज़्यादा ही होगा। तो इट मीन्स कि इसमें डायरेक्ट जो है वो प्रोपोर्शन है। तो इन दिस केस वी जस्ट मल्टीप्लाई दीज टू and then multiply these two. So just to, okay, you can cross multiply and make an equation. So it will be 108x is equal to 150 multiplied by 30. Now 108x is equal to, now we can multiply these two. We will have 4500, or x is equal to 4500 over 108. Now you can use your calculator. 4500 divided by 108, we will have 41.666, so 41.67 kg is the answer.
Similarly, moving to the next question. Okay, now in question number 2, again we have almost a same type of the question, that the find the cost of 13 kg of biscuits if 6 kg of them cost $27. Find the cost. It means the first heading you will write as cost, and then the 13 kg of biscuit. So here you can just write the kg, you can write, or you can just write the mass as well. ओके, इन द फर्स्ट लाइन आपने दोनों जो गिवन वैल्यूज होती हैं वो लिखनी होती हैं। याद रखिएगा, एक्स को आपने ना सेकंड में यूज करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो देखिए इसमें ये है कि इफ 6 kg ऑफ देम कॉस्ट $27, तो 27 and write 6 over here, and now we have to find the cost. So again you can suppose this as x, and 13 kg, write 13 over here. ओके, अब इसमें वही है, चेक करें कि इसमें से डायरेक्ट है या इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो यू कैन सी कि अगर 6 kg बिस्किट हो तो उनकी कॉस्ट $27 है। तो अब हमारे जो बिस्किट्स का जो मैस है वो 13 kg हो गया है, तो डेफिनेटली मैस काफ़ी ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा हो गया। तो इसकी जो कॉस्ट है ऑटोमेटिकली वो भी 27 से इंक्रीज करेगी। तो इट मीन कि बोथ वैल्यूज जो हैं, बोथ क्वांटिटीज आर इंक्रीजिंग। सो अगेन ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है। और हम इसमें सिंपल क्या करते हैं, वी मल्टीप्लाई दीज टू एंड देन मल्टीप्लाई दीज टू। ओके जी, वी विल हैव 6x इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाइड बाय 13, और x इज इक्वल टू 27 times 13 over 6. Now just use your calculator to get your final answer. So 27 multiplied by 13 divided by 6. So we will get 58.5, and it is the cost, so you write dollars. So जो 13 kg ऑफ बिस्किट्स हैं उनकी जो प्राइस होगी वो $58.5 होगी। Okay, no, the third question is that 5 by 9 of the piece of the metal has a mass of this. What is the mass of 2 by 7 of the metal? Now 5 by 9 of the piece of metal. So here you can write piece of metal, and the second heading is the mass. kg में है, अगर आप kg भी लिख लेंगे इट्स ऑल राइट। ओके जी, राइट 5 by 9 over here and has a mass of 7 kg. तो what is the mass of 2 by 7? और mass हमने फाइंड करना है, तो अगेन यू कैन सपोज सर कि ये x है। ओके, आई विल सजेस्ट कि आप इसको डेसिमल में चेंज ना करें, फ्रैक्शन में ही रहने दें, तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो इजी आपकी हो जाएगी। अब 5 by 9 है, अगर आप इसको डेवलप करना है कि सर इसमें रेशो कौन सी रेशो लग रही है, सर ये डायरेक्ट है या इनवर्स है, तो 5 by 9 को आप कैलकुलेटर से डेसिमल में देख सकते हैं। तो ये सिमिलरली 2 by 7 है। तो 5 by 9 अगर आप करेंगे तो यू विल हैव 0.555। ठीक है, ये जस्ट टू चेक है कि सर इसमें कौन सी जो फ्रैक्शन है वो ग्रेटर है, कौन सी स्मॉलर है। ये 0.56 बनता है। और अगर आप 2 by 7 करेंगे तो ये है 0.29 है, 0.29 है। तो आप देखें, आपको बड़ा क्लियर आइडिया है कि सर इसमें ये जो 5 by 9 है ये ग्रेटर उसकी पीस ऑफ मेटल है और ये स्मॉलर है। तो अगर ग्रेटर का मैस 7 kg है तो अब पीस ऑफ मेटल हमारा शॉर्ट हो गया, तो इट मीन्स कि इसका जो मैस है वो भी
डिक्रीज करेगा, तो अगेन जो दोनों जो क्वांटिटीज हैं वो डिक्रीज करेंगी, तो इट मींस कि ये फिर हमारा जो क्वेश्चन है वो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ही है। ओके जी, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड देन 5/9x इज इक्वल टू 2/7 multiplied by 7. Now in the fraction you can cancel these two. 7 1 is the 7, 7 1 is the 7. So here we will have 5/9 x is equal to no only 2. Now take 9 to the other side. 5x is equal to 9 multiplied by 2. So 5x is equal to 18 or x is equal to 18 by 5. Okay, the final answer is 3.6. 3.6 and it will be kg. Don't forget to write the unit. तो डायरेक्ट वेरिएशन के जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो उनका जो इजीएस्ट वे है कि आप उसको इस टेक्निक से करेंगे तो इंशाल्लाह यू विल गेट द गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक. Okay, that's it for today. Thank you for watching the video.